समलिंगी विवाह को आईनगत वैधता मामला रे आसिला सुप्रीम राय। समलिंगी विवाह मौलिक धारा परिसरभुक्त नुहे, तेणु सरकार स्वतंत्र कमिटी गठन करने को कहिसेंती सुप्रीम कोर्ट। एने संसद स्वतंत्र आईन आनिबा आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट को 5 जणिया खंडपीठ बहु प्रतीक्षित राय प्रकाश करिसेंती। प्रधान विचारपति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अध्यक्षतार संवैधानिक खंडपीठ उक्त मामला उपरे 10 दिन धरी शुणाणी करथिले। संवैधानिक खंडपीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा खंडपीठ ए राय प्रकाश करिसेंती। तेबे देश में समलिंगी संपर्कर ग्रहणीयता बढ़ी, निज जीवन साथी बाछिबार अधिकार समस्तଙ୍କୁ मिलिबा आवश्यक। तेणु एने संसद विचार करू बोली कहिसेंती सर्वोच्च न्यायालय। देश में समलिंगी विवाह को आईनगत स्वीकृति मिलिबो कि नाही से नै गत मे 11 रे संवैधानिक खंडपीठ मामलार शुणाणी शेष करी राय संरक्षित रखिथिले। समलिंगी विवाह आम ही सोसाइटी क्रिएट करचे जे ये समलिंगी से हेट्रोसेक्सुअल सी अमुक समक सीटा मनुष्यर चॉइसेस एंड प्रत्येक मनुष्यर मौलिक अधिकार प्रथम अधिकार जे सी निज हिसाब रे निज रेस्पेक्ट रे ए सोसाइटी चली पारिबो बंची पारिबो। समलिंगी विवाह होची हमर किए को पार्टनर को चूज कला मु गोटे पुरुष को चूज करी पुरुष होइकी गोटे स्त्रीलोक को चूज कर लेसबियन मैरिज कि ट्रांसजेंडर जड़े आ गोटे पुरुष को भाई पाला इंटर जेंडर मैरिज सेटा जदि हैला ताले गोटे मनुष्यर अधिकार सी सब्यस्त कर पाला जे मु मो हिसाब से बंची। बहुत लोक आज्ञा सोसाइटी रे बहुत स्त्रीलोक जो मैंने निजको आइडेंटिफाई करती दे आर अट्रैक्टेड टू फीमेल्स बट से बाहा जाती गोटे पुरुष को एंड जीवन यापन करती। केवल रिप्रोडक्शन इज नॉट मैरिज मो हिसाब से विदाउट रिप्रोडक्शन भी बहुत कपल्स स्ट्रेट कपल्स हेट्रोसेक्सुअल कपल्स अच्छे छुआ ना से एडप्ट भी करती बट मो हिसाब से प्रथम मनुष्यर मौलिक अधिकार जे जी जहाँ को भल पाइला जहाँ को बाछिला ता संगे जीवन यापन कर लोक 20 वर्ष भल पाइकी भी तापर भी डिवोर्स नहीं। सो यहाँ प्रथम अधिकार आपणकर जे आप बाछे क्या संगे जीवन अतिबाहित करेंगे। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा डॉक्टर सुशांत कानून को सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर कानून को आपको स्वागत करुच्ची कलिंग टीवी को केमती देखुंत कौन प्रकृत में ये राय आसी कहे समलिंगी विवाह को नहीं जो सुप्रीम राय वर्तमान समय आसी। in case you go into the details of the verdict of the apex court माननीय सुप्रीम कोर्ट कर जो 5 जणिया खंडपीठ जहाँ verdict देइचंती it is a very clear cut and crystal clear verdict एथरे किछि ambiguity नाही। सुप्रीम कोर्ट 5 जणिया खंडपीठ कहिले right to choose and see how it would affect cases of LGBTQI couples which are pending before courts as well. Ma'am, is there any suggestion given to the government by the Supreme Court? Yes, they have been asked to form a committee wherein large number of stakeholders will be involved to evaluate and see if a separate legislation can come, because one option that was available to the court was to see SMA, the Special Marriage Act, as an example, and to see if they could interpret it in a manner to include the rights of the couples. But they said that we cannot do that, so we cannot make law either. So therefore, it is for the Union of India to formulate a committee, and that committee should include various stakeholders whose opinion can be taken and an appropriate law can be framed. I don't know whether we see something like common law partnerships, live-in partnerships coming into fore. That is something that only time will tell. Ma'am, the LGBT community would be able to adopt a child after a parted judgment because 3 judges are against that issue and 2 are in favor. Would it be possible for them to adopt? See, I think it will become slightly tricky. However, so far as unmarried couples' right to adopt is concerned, that is there. So it will create some confusion. I think we will also wait for the entire judgment to really able to see how it will play. पुनः फेरुछु डॉक्टर कानून को हम सहित जोड़ी हुई रही। डॉक्टर कानून को एथरु कौन बुझा पड़ुछि जे देश में समलिंगी संपर्क ग्रहणीयता बढ़ी आ समस्ते निजर जीवन साथी बाछिबार निहात भाव में आवश्यकता रही अधिकार से रही तेणु ये नहीं कि आईन से भाई किसी ना ये दायित्व सुप्रीम कोर्ट सरकार न्यस्त कर
कौन सुप्रीम कोर्ट कर जो 5 जणिया खंडपीठ डायरेक्टिव्स अच्छी आज्ञा very crystal clear to the parliament as well as state legislative assemblies. ସେଥିରେ କହିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ special marriage act which has been governed by the parliament, which has been governed by the constitution of India, ସେଟା unconstitutional ନୁହଁ 1954 special marriage act ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବିବାହ ହଉଥିଲା. This was what the law says. କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯୋଉ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ verdict ଆସିଛି apex court verdict today on right to marry for LGBTQIA plus people. You got my point? So lesbian, gay, bisexual, transgender, queer जो कम्युनिटी के हम माने घृणा चक्षुरे देखुଥିଲେ किए जदि स्वामी स्त्री रहिले हस्बैंड एंड वाइफ हेकरी हम बोलते अरे एमन कोन हाउ दे आर लिविंग टुगेदर लिव इन रिलेशन देयर आर मेनी ऑप्शंस किंतु वर्तमान खंडपीठ कहले जतो डिक्रिमिनलाइजेशन कले स्ट्रक डाउन कले 377 in the constitution माने homosexuality तापरे it leads towards a marriage in the same sex. A woman woman can marry a woman, one man can marry a man. ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଅପ୍ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସବୁ କହିକିରି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଫର୍ ଦି ବେଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୱିର କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ LGBTQIA ପ୍ଲସ୍ ପିପୁଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯେମିତି ହ୍ୟାମ୍ପର ନ କରେ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ହାଭ୍ ଏ ରିଲୁକ୍ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स रे कहिसंती ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अवश्य तांकर 5 जणिया बेंच का विचार एग्रीमेंट हेची डिसएग्रीमेंट हेची बहुत मेनी पार्ट्स रे किंतु मेन आर्गुमेंट ऑफ द LGBTQI plus community was the discrimination in access to the institution of marriage on the ground of ascriptive characteristics like in particular sexual orientation and gender identity. ओवरऑल जदि हम देखु जे निहात भाबरे डॉक्टर कानून को बहुत बहुत धन्यवाद अधिक आलोचना करथबारु डॉक्टर सुशांत कानून को सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी हम सहित जोड़ी होइथिले 5 जणिया संविधानिक खंडपीठ रे सुनानी होइछि सुप्रीम राय आसीछि जीवन समस्त को जीवन साथी चयन करिवार अधिकार मिलबा दरकार एवं संसद रे एने स्वतंत्र आईन आसु सरकार स्वतंत्र कमिटी गठन करिवे ए नै सुप्रीम कोर्ट ये राय सुनाइछन्ती समलिंगी विवाह को नै आईनगत वैधता मामला रे।